Assalamu alaikum. Uh, Today's topic of presentation is Introduction to Maxillofacial Traumatology and Mandibular Fractures. This is a very important and interesting topic as far as the especially the exam is concerned. Exam के अंदर you guys will get minimum 2 or maximum 3 questions from trauma. ठीक है, trauma का जो parts हैं they include the ATLS acute trauma life support जो primary management की जाती है किसी भी patient की when we receive a patient of trauma, and जो इसके अलावा चीज़ें होती हैं जो trauma के अंदर included वो होती हैं soft tissue injuries, bony injuries, and bony injuries we will study all bone injuries starting from mandible, maxilla, zygomatic complex, all 3 quadrants of the face: upper third, middle third, and lower third. Upper third quadrants include the frontal bone fractures, middle third includes the mid face, zygomatic complex, orbital floor fractures, orbital bone fractures, and the nose fractures, and the lower third includes mainly mandible and condylar neck fractures. You'll study condylar neck fractures as a separate entity because those are very important as far as the exam is concerned. Trauma, as you all know, traumatic injuries are received. Main cause of trauma, of course, is road traffic accidents as far as Pakistan is concerned, but depending upon other areas of the world, other countries of the world, they may differ. The epidemiology may differ. Let's have a look at the presentation outline first. We'll be defining trauma at the start, then a slight historical background, how through the years the management of trauma patients has evolved. Then the types of fractures, what are the different types of fractures, basic fractures, not specific to mandible but to all of the maxillofacial region. Then the common sites of fractures, types of classifications. There are multiple classifications, but a few are very important as far as the exam is concerned. And then we look at the pattern of injury. What's the normal pattern of injury when it comes to maxillofacial region? History and clinical examinations of a typical trauma patient. What are the signs and symptoms we get in different types of fractures? The clinical tests before doing the radiology. What kind of different tests, clinical chairside tests we can do to confirm what type of fractures that is. And then the radiology imaging and how to come up with a diagnosis after all of these tests and imaging, and then treatment planning. One more thing which is missing here is the complications. We'll also have a look at the complications of a maxillofacial trauma patient. A fracture is defined as any complete or incomplete break in the bony continuity. So it's important to know that even if it is a incomplete break, it is also called a fracture. We'll study those incomplete fractures. Those incomplete fractures are basically called green stick fractures. आगे आप लोग पढ़ेंगे, आगे आप लोग को बताऊंगा. The epidemiology of mandible fractures is that they comprise 40 to 62% of all facial fractures. Facial bone fractures are very common in different types of scenarios because जो head and neck region है ये बड़ा एक crucial region है when it comes to fights, when it comes to road traffic accidents, when it comes to suicide attempts, when it comes to gunshot wounds, when it comes to sports injuries. जैसे boxing के अंदर it is very common to have a broken jaw,
गन शॉट वुंड्स में बड़ा कॉमन है, बिकॉज हेड की तरफ एम करके बहुत लोग मारते हैं. जब सुइसाइड अटैम्प्ट होती है, लोग अपना रिवॉल्वर रखते हैं चिन के नीचे एंड देन दे फायर दैट गन. देन जो असॉल्ट होती है, फिस्ट फाइट्स होती हैं, यानी कि बार में कई ड्रंक लोग हैं एंड बार में कोई एक्सीडेंट हुआ, बार में लड़ाई हो गई, असॉल्ट किया किसी ने किसी को, तो वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बार इंजरी इज़ बेसिकली अ लेफ़्ट ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर. वो क्यों है? क्योंकि जब किसी को गुस्सा आता है और ज़्यादा लोग राइट हैंडेड है दुनिया में, तो जब मुक्का पड़ता है ना राइट साइड ऑफ द चीक से, तो लेफ़्ट साइड का ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है. ये जो एपिडेमियोलॉजी यहाँ पर लिखी हुई है ना, दैट इज़ फ्रॉम द पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल, एंड इफ़ यू सी दिस इज़ अ हॉस्पिटल इन पार्कलैंड अमेरिका. सो ये यूएस के अंदर जो है ना ज़्यादा कॉमन, वो एग्रीवेटेड असॉल्ट है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड अल्कोहल कंजम्पशन in the US. पाकिस्तान के अंदर stats are a little different. Unfortunately, we don't have the Pakistan stats in yet. But पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा कॉमन है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स. मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हेलमेट यूज़ बहुत कम है. सो दैट एड्स अप टू फ्रैक्चर्स इन द मैक्सिलोफेशियल रीजन ड्यू ज़्यादा बिकॉज ऑफ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स. असॉल्ट पाकिस्तान में है लेकिन थोड़ा कम है. गन शॉट वुंड्स भी थोड़ी कम है. स्पोर्ट्स इंजरीज़ भी कम है. ज़्यादातर पाकिस्तान का मेजर जो है ना कॉज ऑफ मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, दैट इज़ अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्पेशली ड्यू टू बाइक, नॉट इवन कार्स. बिकॉज पाकिस्तान में जो कार एक्सीडेंट्स हैं, दे आर नॉट वेरी, आई वुड से, lethal, as in because the speed of the cars is very slow in Pakistan because of the congested traffic. So ज़्यादातर मोटरसाइकिल, एंड दैट टू बिकॉज लैक ऑफ प्रोटेक्टिव हेलमेट वेयर. नाउ इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना फ्रैक्चर्स की, नॉट जस्ट मैंडिबल बट ऑल ओवर द मैक्सिलोफेशियल रीजन्स, वो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं. सो इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम के क्लासिफाई मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स, सो उसमें सिर्फ एक क्लासिफिकेशन नहीं, आप 5-6 क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक क्लासिफिकेशन है डिस्प्लेस्ड और अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स. ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात लिखी हुई है, डिस्प्लेस्ड वर्सेस अनडिस्प्लेस्ड. इसमें होता ही है कि अगर फ्रैक्चर बहुत हाई एनर्जी है, ऑब्वियसली दैट विल बी अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, बहुत दूर गए होंगे फ्रैक्चर सेगमेंट्स एक दूसरे से. लेकिन अगर लो एनर्जी फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर सेगमेंट्स जो है ना, वो एक दूसरे से बहुत दूर नहीं गए होंगे, ज़्यादा सेपरेट नहीं होंगे. सिंपल ये डिस्प्लेस्ड और अनडिस्प्लेस्ड. अनदर टर्मिनोलॉजी विच यू कैन सी इन दिस स्लाइड एज वेल इज़ द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल नेचर ऑफ फ्रैक्चर. Okay, so favorable fractures are those in which the force and direction of the blow of the cause of trauma tends creates a fracture in a way कि the muscle pull tends to pull the fracture segments together. That is called a favorable fracture. Okay, I will repeat. इस तरीके से फ्रैक्चर हो कि इस ओरिएंटेशन का फ्रैक्चर हो मैक्सिलोफेशियल रीजन में कहीं का भी, स्पेशली मैंडिबल में, कि द पुल ऑफ द मसल्स अटैच टू दोज फ्रैक्चर्ड बोनी सेगमेंट्स टेंड्स टू पुल द फ्रैक्चर सेगमेंट्स टूवर्ड्स ईच अदर. दैट इज़ अ फेवरेबल फ्रैक्चर. कैसे, मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ. सी, ये जो पिक्चर है, इसके अंदर आप देखें, जो राइट साइड ऑफ द मैंडिबल है, उसमें जो इफ़ यू नोटिस कि जो फ्रैक्चर की ओरिएंटेशन है, राइट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप देखें मैसेटर मसल रैमस को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, और जो मिडल का जो सेगमेंट है मैंडिबल का, टीथ बेयरिंग जो सेगमेंट है, दैट इज़ बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स बाय द सुप्राहायोइड मसल्स. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि फ्रैक्चर सेगमेंट्स आर बीइंग पुश्ड अपार्ट. दिस इज़ एन अनफेवरेबल फ्रैक्चर. लेफ़्ट साइड पे देखो तो मैसेटर मसल जो है लेफ़्ट साइड पे इफ़ यू सी,
the orientation of the fracture is in such a way कि masseter pull जब कर रहा है ना ramus को, तो that is basically pushing the fracture segments towards each other. I hope आपको समझ आ गई होगी. अगर किसी को समझ नहीं आई, please ask me again. This is called a horizontally favorable and unfavorable fracture. Now let's see what a vertically favorable and unfavorable fracture is. ये जो ब्लू कलर का आपको स्ट्राइप ऑफ एक टिश्यू नज़र आ रहा है, दिस इज़ द लैटरल टेरिगोइड मसल और द मीडियल टेरिगोइड मसल, सॉरी मीडियल टेरिगोइड मसल. ये मीडियल टेरिगोइड जो मसल है ना, फ्रैक्चर की ओरिएंटेशन राइट साइड पे इस तरीके से है कि इट इज़ मीडियल टेरिगोइड का जो पुल है ना, इट इज़ बेसिकली कॉजिंग द फ्रैक्चर सेगमेंट्स टू पुश टूवर्ड्स ईच अदर. तो ये फेवरेबल फ्रैक्चर है, इसमें पेशेंट को पेन भी कम हो रही होगी. जब मिडिल टेरिगोइड मसल खींचता होगा, फ्रैक्चर सेगमेंट्स पास आते हैं. लेफ़्ट साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे, यस, इस साइड पे आप देखें तो फ्रैक्चर सेगमेंट्स इस तरीके से फ्रैक्चर हुआ है मैंडिबल के, जब पुल हो रहा है ना मसल, तो दैट इज़ कॉजिंग द फ्रैक्चर सेगमेंट्स टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. दिस इज़ कॉल्ड अ वर्टिकली अनफेवरेबल फ्रैक्चर. ओके, सो दीज आर हॉरिजॉन्ट. अब अगेन इसके अंदर बड़ा सिंपल है जी. फ्रैक्चर ओरिएंटेशन इस तरीके से है बॉडी ऑफ द मैंडिबल फ्रैक्चर की, के ऊपर वाले में देखें मैसेटर पुल कर रहा है, नीचे से सुप्राइड मसल्स पुल कर रहे हैं, फ्रैक्चर सेगमेंट्स दूर जा रहे हैं, पेशेंट को बड़ी पेन हो रही है. दूसरा फ्रैक्चर जो है वो इस तरीके से हुआ है, देखें वो ऊपर से नीचे की तरफ, आगे की तरफ आ रहा है फ्रैक्चर. नीचे वाली इमेज के अंदर देखें आप मैंडिबल के, तो जब मैसेटर ऊपर पुल कर रहा है तो उसकी वजह से फ्रैक्चर सेगमेंट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. ना इस ज़रूरी क्यों है? एक तो पेन के हिसाब से ज़रूरी है, दूसरा जब हमने इस मैंडिबल इस फ्रैक्चर को जब फिक्स करना है ना, तो उसमें भी क्लिनिकल डिसीजन जो लेना है कि हाउ टू फिक्स दिस फ्रैक्चर, दैट इज़ गोइंग टू बी अ फैक्टर फॉर अस कि जो फेवरेबल फ्रैक्चर होगा ना, उसमें हम लोगों को फिक्सेशन में भी हेल्प हो रही होगी. कैसे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा इंशाल्लाह. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन बाय द टाइप ऑफ फ्रैक्चर. नाउ फ्रैक्चर्स कैन बी सिंपल और क्लोज्ड. ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर इज़ व्हेन देयर इज़ अ फ्रैक्चर एंड इट इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सिंपल तरीन बात ये देखो ज़रा, सिंपल फ्रैक्चर कैसे फ्रैक्चर हुआ, और कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, एंड म्यूकोजा के अंदर क्लोज्ड है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपल फ्रैक्चर. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ अ कंपाउंड फ्रैक्चर? कंपाउंड फ्रैक्चर इज़, लेट्स से सिम्फिसिस का डेंटेट एरिया का कोई भी फ्रैक्चर विल बी अ कंपाउंड फ्रैक्चर. वाई? बिकॉज ये फ्रैक्चर हुआ एंड थ्रू द जिंजिवल सल्कस, थ्रू द टीथ, इट इज़ कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ओके, कंपाउंड फ्रैक्चर को ये भी, वो भी कंपाउंड फ्रैक्चर हो सकता है. लेट्स से रैमस का फ्रैक्चर है और बाहर से किसी को लगी है एक्स, ठीक है, किसी ने अटैक किया, असॉल्ट किया किसी दूसरे बंदे के साथ, और उसने रैमस वाले एरिया पे एक्स मारी किसी को, ठीक है, तो बाहर से भी कट है, अंदर से बोन भी कट गई, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेशन हो गई फ्रैक्चर की, दैट विल बी कॉल्ड अ कंपाउंड फ्रैक्चर. दिस इज़ अ कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर. कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर इज़ व्हेन देयर आर मल्टीपल लाइंस ऑफ फ्रैक्चर कॉजिंग ड्यू, दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू अ क्रश इंजरी. ठीक है, गन शॉट वूंड हो गई, जैसे मैं आपको एक्स बता रहा हूँ, किसी ने मल्टीपल टाइम्स किसी को एक्स मारी, बहुत हाई एनर्जी फ्रैक्चर हुआ, लेट्स से पेशेंट एयरप्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो क्रशिंग इंजरी जब हो, दैट इज़ कॉल्ड अ कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर. ओके, सो सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, कम्युनिकेटेड हो गया. देन देर आर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स, a fracture in which one cortex of the bone is broken, the other cortex is being bent. This is mostly seen in children. You see, एक cortex टूट गया, दूसरा cortex जो है वो intact है. ऐसे फ्रैक्चर चिल्ड्रन में क्यों होते हैं? बिकॉज चिल्ड्रन, क्योंकि आपको पता है शैतानियाँ बहुत करते हैं एंड जंप्स मारते हैं, उनको डेंजर, दे डू नॉट सेंस डेंजर, कहीं पर भी चढ़ गए, जंप मार दी, एक दूसरे को मार दिया बच्चों ने. तो अल्लाह ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उनका ये रखा होता है कि देयर बोन्स आर वेरी स्पॉन्जी, देर वेरी फ्लेक्सिबल, वो बेसिकली ट्विस्ट हो के सीधी हो जाती हैं, टूटती नहीं है. लेकिन और आपने, उनका नाम ग्रीन स्टिक क्यों है? आपने देखा होगा कुछ ट्रीज़ होती हैं उनकी ग्रीन स्टिक, उनको जब बेंड करें तो वो एक तरफ से टूट जाती है लेकिन दूसरी तरफ से वो जुड़ी रहती है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स. एंड फाइनली we have a
पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अ फ्रैक्चर अकरिंग फ्रॉम माइल्ड इंजरी बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग बोन डिजीज़. ठीक है, लेट्स से किसी का ट्यूमर है, ठीक है, एंड उसने पूरे जॉ को, एमिलोब्लास्टोमा है और उसने पूरे जॉ को इन्वॉल्व किया हुआ है और पेशेंट को पता नहीं है. और पेशेंट जो है ना ऐसी खा रहा है, कुछ नॉर्मल सा कुछ खा रहा है, एकदम से टक की आवाज़ आई और पेशेंट का जॉ टूट गया. और आपने जब एक्सरे किया तो पता चला कि कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिंपल कुछ खाते हुए टूट गया और एक्सरे में पता चला जी पैथोलॉजी है. दैट इज़ कॉल्ड अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. ओके ओके. अनदर क्लासिफिकेशन इज़ multiple fractures, a variety in which there are two or more lines of fracture at the same bone not communicating with one another. Okay. मल्टीपल फ्रैक्चर और कम्युनिटेड फ्रैक्चर के अंदर जो फ़र्क है ना वो यही है कि जो टू और मोर लाइंस ऑफ फ्रैक्चर होंगी, ठीक है, मल्टीपल फ्रैक्चर, लेट्स से केनाइन के नीचे एक फ्रैक्चर लाइन रन कर रही है, प्रीमोलर के नीचे एक रन कर रही है, मोलर के नीचे रन कर रही है, ठीक है, 3 जगह पे फ्रैक्चर हुआ है, बट दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. बट इफ दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर दैट विल बी कॉल्ड अ कम्युनिटेड फ्रैक्चर. देन देयर इज़ एन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या है? ये नॉर्मली मैक्सिला में होता है. मैक्सिला इज़ अ वेरी सॉफ्ट बोन लाइंग ऑन अ वेरी हार्ड बेस. जो स्कल बेस है वेरी हार्ड होती है, मैंडिबल बहुत हार्ड होता है. मैक्सिलरी फ्रैक्चर क्या करते हैं, मैक्सिला टूटता है और वो टूट के अंदर इम्पैक्ट कर जाता है स्कल बेस के अंदर, जाइगोमा के अंदर, ऑर्बिटल फ्लोर के अंदर, ठीक है, इम्पैक्ट कर जाता, मतलब फंस जाता है, जाके धंस जाता है उसके अंदर. दैट इज़ कॉल्ड एन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. अ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रैगमेंट इज़ फर्मली ड्रिवन इन टू दी अदर. नेक्स्ट, एट्रोफिक. ठीक है, आपको पता है विद एज मैंडिबल रिजॉर्व करता है. विद एज अ मैंडिबल रिजॉर्व्स एंड एंड पे व्हेन देयर इज़ अ कम्प्लीटली रिजॉर्व्ड मैंडिबल, then that can lead to a fracture of the mandible due to the uh, relatively less strength of the mandible. How? I'll show you in the next picture. Indirect fracture. Indirect fracture is a type of fracture in which a fracture is occurs at a distant point from the site of injury. For example, a guardsman fracture. ये सब लोग आप ध्यान से सुन लें. A guardsman fracture. It's not called a guardsman fracture anymore. It used to be called a guardsman fracture. In the अर्ली 19th सेंचुरी आपने देखा होगा, एक गार्ड्स होते हैं जो कि रेड कलर का ड्रेस पहन के, बड़ी सी कैप पहन के क्वीन के पैलेस को गार्ड करते होते हैं ब्रिटेन में. जिन देखा होगा आपने, पूरा दिन खड़े रहते हैं चुप करके, सीधा इधर उधर नहीं देखते, स्टिल खड़े रहते हैं बिल्कुल. अगर आपको ना पता हो तो याद करें, जिस तरह जिनको मिस्टर बीन जाके बहुत तंग करता होता है, ठीक है, वो जो गार्ड्स हैं ना वो स्ट्रेट खड़े होते थे एंड जो उनकी पेरिफेरल पूलिंग होती थी, सारा ब्लड जो था इट यूज टू गेट पूल इनटू देयर फीट एंड that led to that used to lead to orthostatic hypotension and thus leading to syncope. And जब syncope थी तो guard used to fall down straight onto their face down, और जब नीचे गिरते थे तो फर्स्ट उनका चिन पहले ज़मीन पे लगती है. उसकी वजह से होता क्या है कि द चिन गेट्स फ्रैक्चर्ड इन द सिम्फिसिस रीजन मिड लाइन में एंड इनडायरेक्ट इंजरी अकर्स इन द बायलैटरल कंडाइलर एरियाज एंड बायलैटरल कंडाइलर सब कंडाइलर फ्रैक्चर्स हो जाते थे. अब इसमें भी कुछ अल्लाह की मसलहत होती है कि कंडाइल क्यों फ्रैक्चर कर जाता है. बेसिकली कंडाइलर नेक्स आर थिन. इफ़ द कंडाइलर नेक्स वर नॉट थिन तो मैंडिबल, the head of the condylar heads can in such type of trauma, in falls, the condylar heads can directly invade the skull base in the middle cranial fossa and that can cause basically lethal brain injury. So condylar necks पहले टूट जाती हैं ताकि फोर्स डिसिपेट हो जाए और वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र ना हो. नेक्स्ट, complicated or complex fracture, a fracture in which there is considerable injury to the adjacent soft tissues or adjacent parts, be simple or compound. Okay, if you hear the name complex fracture, ठीक है, तो उसको कम्युनिटेड या कंपाउंड के साथ मिक्स ना करें. कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर मींस के बोन के साथ इंजरी एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू की भी एक्सटेंसिव है. जैसे फेशियल नर्व इंजरी हो गई, रैमस पे चोट लगी एंड देयर इज फेशियल नर्व इंजरी एज वेल, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर.
I just want to show you a picture. Okay, we'll see that picture later on. Now, classification of by site of the fracture. These are the different sites. You see, anterior to the mental foramen is a region called the symphysis and parasymphysis. Between the mental foramen and the angle of the mandible area, the last molar area, be it wisdom tooth or the second molar, this area is called the body of the mandible. Okay. Okay, let's define all these areas. A condylar process fracture, a fracture that runs from the mandibular notch to the posterior border of the ramus of the mandible. So if there is a fracture, you see a notch between the condylar and the coronoid process. Okay, this is also called the incisura. Incisura, incisura. A fracture which runs from the incisura to the posterior border of the mandible is called a condylar process fracture. A fracture that runs from the incisura or the mandibular notch to the anterior border of the ramus, that is called a fracture of the coronoid process, which is the rarest type of mandibular fracture. Okay, let's move to the next fracture. Ascending ramus fracture, a fracture in which the fracture line extends horizontally through both the anterior and posterior borders of the ramus, and that runs vertically from the mandibular notch to the inferior border of the mandible. ओके, असेंडिंग रैमस फ्रैक्चर आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको एंगल फ्रैक्चर समझाता हूँ. एनी फ्रैक्चर डिस्टल टू द सेकेंड मोलर एक्सटेंडिंग फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द curve formed by the junction of the body and ramus in the retromolar area to any point on the curve formed by the inferior border of the body and posterior border of the ramus of the mandible. Okay, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, मैं आपको आसान तरीके में समझाता हूँ एक बात. ओके, the angle of the mandible is an area which is defined as a line extending from the second molar or the last standing molar. ठीक है, बल्कि second molar, थर्ड मोलर भी अगर होगा ना तो वो एंगल के अंदर ही आएगा. सेकेंड मोलर के डिस्टल से एक लाइन ड्रॉ करें इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल तक, यहाँ से लेके सुपीरियरली अप टिल द मैंडिबुलर फोरामेन जो लिंगुअल साइड पे है. ओके, मैंडिबुलर फोरामेन जो लिंगुअल साइड पे होगा, जहाँ पे हम एनेस्थेटिक ब्लॉक देते होते हैं, इस एरिया के दरमियान का जो भी एरिया होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड द एंगल ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, मैंडिबुलर फोरामेन जो लिंगुअल साइड पे है, जिसमें नर्व एंटर हो रही है, उससे लेके ऊपर इंसिस्यूरा से नीचे इंसिस्यूरा तक कोई फ्रैक्चर जो कि रैमस के इंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर दोनों में से गुजर रहा हो, दैट विल बी कॉल्ड एन असेंडिंग रैमस फ्रैक्चर. ओके, नाउ आई नो ये तुम लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, because I cannot make gestures and show you a mandible in front of me, but hopefully I'll show you guys these fractures on a cadaveric mandible, inshallah. A body fracture, any fracture that occurs in the region between the mesial portion of the canine. Okay, a body fracture मैंने आपको बता दिया. A body fracture is any fracture from between the mental foramen and anterior to the second molar. A symphysis fracture is any fracture which is anterior between the two mental foramen, जो भी area, that is called a symphysis fracture. Okay, and the dentoalveolar fracture is the fracture of the dentoalveolar housing. It can be anywhere on the mandible, but it is a fracture of the dentoalveolar housing, not of the basal bone. Okay, here we see a body fracture because it is posterior to the mental foramen and it is anterior to the second molar, so this is called a body fracture, body of the mandible fracture. Again, this is a symphysis fracture because it is anterior to the mental foramen, if you see here. Okay, this is a bilateral body and angle fracture. If you notice here, it's a right body and a left angle fracture. इसके अंदर दो क्लासिफिकेशंस आ रही हैं. नंबर 1 is a body
according to the site, and another classification is a distant fracture, indirect type of fracture. For sure this person got the impact of injury was one of the two sides of this fracture, but the kinetic injury from the force of trauma uh, gets transferred to another area of the bone which is slightly weaker, and वो वाला proportion fracture हो जाता है. uh, okay, this is a fracture, this is a combination fracture of the condylar process and the symphysis. If you notice, the fracture line is running from the incisura, the mandibular notch, to the posterior border of the ramus. So it is a subcondylar. It's a very low subcondylar fracture. Very low subcondylar fracture. Can you guys notice where the fracture is? Yes, it's on the right angle, and it involves the third molar. And such fractures uh, are difficult to treat because there is a third molar in the fracture site which may aid in reduction, which may basically uh, disturb the occlusion, which can serve as something which can cause an infection later on. So we have to decide about the tooth in the fracture line. This right here is, you can see, is a fracture of the body of the mandible. These are the different patterns of mandibular fracture sites. Angle and opposite body, that's a very common pattern. Two fractures with one blow. Bilateral body, again very common. Bilateral angle, condyle and opposite angle, symphysial and condylar fractures. As I said, the kinetic injury can dissipate into other areas of the bone and cause fractures in other weak areas of the bone. Now, diagnosis. How do we diagnose a fractured mandible? Starting from history, when the patient presents to you with a fractured mandible, he can present to you in two ways. Either he can come up in an ambulance unconscious with multiple wounds all over his body, or he can come up in an ambulance bleeding from his oral cavity and complaining of pain. So if that is an emergency situation, it needs to be dealt with the acute trauma life support protocol, the ATLS protocol. वो आपका एक अलग से लेक्चर बाद में होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे मैनेज करते हैं. और द पेशेंट कैन कम अप, यू कैन सी द पेशेंट इन योर OPD एज अ रूटीन केस. द पेशेंट कैन कम टू यू एंड से कि मेरा जी मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया था 3 दिन पहले, आई वेंट टू फलां हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरा हुआ था, प्राइमरी मैनेजमेंट मेरी हो गई थी, एंड नाउ आई एम हेयर टू गेट दिस फिक्स्ड, गेट दिस सेटल डाउन. सो अगर तो इस तरीके से पेशेंट आता है विद OPD on an OPD basis, you start with the history and then we'll do clinical examination and then we'll move on to imaging. History के अंदर I won't go into much detail, but there are certain you need to take history with regards to the trauma. You need to take the medical history and you need to take the history that will help you in deciding whether you can treat this patient in local or whether you can treat that patient under general anesthesia or not. Also, an important factor is systemic bone disease. If the patient has a systemic bone disease, then you need to keep that in mind, because like I said, pathological fractures can occur in patients with systemic bone disease. So when you're fixing that fracture, you need to make sure that you fix the systemic disease as well, and you call up the necessary physician along with you. History will include obviously the type and direction of, like I said, you need to take good history of the mechanism of trauma, the type of injury and everything, whether it was a personal altercation, whether it was a fall, if it is a suicide attempt, if it is a personal altercation and the patient has presented to you directly, make sure you do everything, and obviously it is a medical legal case, then you need to make sure you keep the hospital administration on board with you, and you need to have the police informed right away and then treat that patient.
Okay, in the clinical examination, the clinical examination always starts with extraoral examination, intraoral examination, and then general systemic examination. General system examination you will do at the end, but in sorry, at the start you will do a general physical examination in which you will see the vitals of the patient. If it is a very high energy fracture, obviously the patient is going to be in distress, maybe the patient is in shock, maybe the GCS of the patient is very low in a trauma patient. Let's say you have been called to a neuro ward of your hospital, and you go there and you notice a patient lying on the bed on the ventilator, and the patient's GCS is very low, it's 5, and the patient is in coma, and you've been called to address the facial fractures. The main priority in at that time will obviously be to just take history from the patient's attendant or the attending physician and do the clinical examination to diagnose the fractures. But of course maxillofacial fractures will come at the end. The most important thing is to save the life of the patient and make sure the brain injury that the patient that GCS लो इसीलिए होगा ना क्योंकि ब्रेन इंजरी होगी, तो ब्रेन इंजरी को मैनेज जो किया जा रहा है, जिस तरीके से भी किया जा रहा है, उसकी मैनेजमेंट जब फिनिश होती है देन वी मूव ऑन टू द मैक्सिलोफेशियल फ्रैक्चर्स. एक ये तरीका होता है. दूसरा तरीका होता है कि इफ़ द ब्रेन इंजरी इज़ बीइंग मैनेज्ड सर्जिकली, देन न्यूरोसर्जन के साथ मिलकर ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मे बी आफ्टर द ब्रेन इंजरी हैज़ बिन एड्रेस्ड, ब्रेन इंजरी को एड्रेस किया जाता है. नॉर्मली ब्रेन इंजरी कैन बी अ सबड्यूरल और एन एपिड्यूरल हेमाटोमा, okay, and that hematoma is drained by making some drills in the skull. जब पे अगर उस या ड्यूरल टीयर हो कोई एंड क्रेनिएक्टमी करके क्रेनियोटमी करके उस ड्यूरल टीयर को कोई रिपेयर कर रहा है न्यूरोसर्जन, देन द मैक्सिलोफेशियल surgeon might be on board with the neurosurgeon in the same OR to treat the maxillofacial fractures as well. So trauma will present to you in a variety of ways. Right now I'm talking about a patient who has presented to you excuse me, who has presented to you in your OPD with these symptoms. Okay, depending upon the type and the site of fracture, a patient can have swelling, pain, tenderness to palpation. Obviously the patient can have a step deformity. Extraorally you can find swelling. You during inspection you can ask the patient of pain. When you're doing palpation extraorally you can find tenderness. You can find step deformities, mobility of fragments in the extraoral examination. Changes in occlusion you will find in the intraoral examination. There will be abnormal mandibular movements while if you ask the patient to open his or her mouth. वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि normally the muscles are attached to the to the mandibular segments symmetrically, but when there are fractures, when there are asymmetric fractures, that leads to different muscle pulls in different directions, and that can lead to abnormal mandibular movements. There can be anesthesia, paresthesia, or dysesthesia of the lower lip. Why? If there is a body fracture, let's suppose there is a body fracture and the fracture segments involve the inferior alveolar canal, obviously that will lead to nerve injury and can cause nerve signs as well. ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आप लोगों का. फ्लोर ऑफ द माउथ में इंट्राओरल एक्काइमोसिस, दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक साइन ऑफ अ मैंडिबुलर फ्रैक्चर. फ्लोर ऑफ द माउथ रेड हुआ हुआ है, दैट मीन्स देयर इज अ मैंडिबुलर फ्रैक्चर. ओके, लूज और ब्रोकन टीथ. देयर कैन बी चेंजेस इन occlusion. If there, let's say there is a bilateral angle or subcondylar fracture, there will be anterior open bite. Posterior and anterior, there can be there will be posterior premature contact, there will be an anterior open bite. Let's say there is a parasymphysis fracture, there will be a posterior open bite. Okay, unilateral open bite is suggestive of an ipsilateral angle or parasymphysis fracture. Obviously एक तरफ से एंगल फ्रैक्चर हो गया तो इप्सीलेटरल वहाँ पे ओपन हो जाएगी ना बाइट, दूसरी तरफ पे प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट आ जाएगा. ओके, ये बाकी आप देख लीजिएगा.
physical exam, you can see, if you notice the anesthesia of the lower lip, that is suggestive of a fracture behind the mental foramen. If there is inability to open the mouth, that means coronoid process can be fractured, because coronoid process जो है वो attach होता है temporalis muscle के साथ, and that can lead to trismus and pain. If the patient is unable to close, that means कि alveolus का fracture हो सकता है, angle का fracture हो सकता है, ramus का fracture हो सकता है, because fracture segments हिल रहे होंगे, patient को pain हो रही होगी, वो बंद नहीं कर सक रहा होगा. And last में you can see palpation में this is called the compression test. This is the clinical manipulation test which is done to diagnose mandibular fractures. If you cannot, if let's say if it is an undisplaced, minimally displaced fracture of the mandible and you cannot find it clinically, you try to move the fracture segments gently, but the mandible is not moving, but the patient is complaining of pain. You do this test in which you stand on the backside of the patient at around about 12 o'clock, and you compress with the palm of both of your hands. You place your hands on the angles of the mandible bilaterally and compress both hands. If the patient feels pain, that means you ask the patient the exact location of the pain, and that will confirm the site of fracture. Okay, so this is a symphysial fracture. You see there is a big step deformity here. This is the OPG of the patient. You can see the fracture is running obliquely in the midline. This clinical picture is of the patient after 4 months after the fracture has been fixed. Coming to the imaging now. Imaging में सबसे पहले होती है जी plain films. Always plain films of the mandibular series include right and left lateral oblique views of the mandible. सबसे पहले तो obviously OPG किया जाता है. ओके, आपकी बुक में ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, एग्जाम में आप लोग ये सीक्वेंस लिखोगे, बट फॉर वाइवा पर्पस, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, द फर्स्ट एक्सरे यू डू इज़ एन OPG. फ्रैक्चर का एक रूल होता है बच्चों, और वो ये रूल होता है कि ऑलवेज एक्सपोज अ फ्रैक्चर. इफ़ यू डूइंग इमेजिंग ऑफ अ फ्रैक्चर, ऑलवेज एक्सपोज अ फ्रैक्चर एट 2 angles right angle to each other, always, so that you can know the buccolingual as well as the mesiodistal distance between the fracture segments, or the displacement of the segments. Okay, so we do PA view of the mandible, we do Townes view. Townes view is basically a PA view with a different angle. You should know the name. It's not important at your level right now, but you should know OPG, panoramic view of the mandible, is very important. A modified Townes view is done for condylar fracture. वो आपको हम बाद में पढ़ाएंगे जब condylar fracture करेंगे. Occlusal view किया जाता है, lower occlusal view mandible के लिए, to see the buccolingual displacement of the fracture. Periapical किया जा सकता है, मतलब not very common, but किया जा सकता है. TM joint tomograms भी किया जाता है to see condylar fractures. And finally, computer tomography scans. Computer tomography is basically very important in trauma. It is done when there are multiple high energy fractures, when there is associated soft tissue injuries, when there is associated globe injury, there is associated multiple bones are fractured in all 3 quadrants of the face. Then we can do computer tomography. If there is brain injury, we can also do computer tomography to see fractures. In big level 3 trauma centers of the United States, computer tomography is being done for every trauma patient. But in Pakistan, normally we do OPG, PA view, occlusal views first, and if needed, we can move on to computer tomography as well. These are the different treatment options of managing a mandibular fracture. Firstly, no treatment can be done. Let's say if it's a green stick fracture, minimally displaced fracture, we can just put the patient on soft diet and the fracture segments will heal them by themselves. You guys have to remember the basic principle of bone healing after a fracture is to fix a fracture,
fixing a fracture means bringing the fracture segments to close to each other in the right spot, in the spot where they were before the injury. The second step is to make sure the fracture segments are immobilized in that position. These two principles are important for fracture management. Number one is fixation and the other is immobilization. ये दो होंगे काम, हड्डी को करीब लाएंगे और उसको वहीं पे रोक के रखेंगे, तब जाकर हीलिंग होगी. The second option is a maxillomandibular fixation, also called the MMF. MMF is सदियों पुरानी जो है ये एक टेक्निक है. इसमें आप लोगों ने अब एक्सरसाइज भी इसकी की थी, आप सब बच्चों ने. इफ़ यू रिमेंबर, वी जस्ट शट द माउथ डाउन विद द हेल्प ऑफ वायर्स, ठीक है, और ब्रैकेट्स और आर्च बार्स. वी क्लोज द माउथ, वी immobilize the mandible. This is a type of non-rigid fixation. Non-rigid fixation मतलब there will be macroscopic movement between the fracture segments. It won't be a very rigid fixation, but there will be immobilization of the fracture. This used to be done before the advent of mini plates, rigid fixation plates, screws, pins, but nowadays maxillomandibular fixation as a treatment option is seldom used because it is very hard for patients to keep their mouth closed for 3 months, because the normal healing time of a fracture is minimum तो 2 months होता है, लेकिन 3 months is a standard time, 12 weeks. So mandibular fixation यूज़ की जाती है आजकल, ज़रूर यूज़ की जाती है, because when we're fixing a mandibular fracture where we are relying on the occlusion to reduce the fractures, to bring the fracture segments together, okay, उसके अंदर maxillomandibular fixation यूज़ की जाती है. The third option is an open reduction with non-rigid or semi-rigid fixation. So remember, the gold standard for treating any type of fracture is open reduction internal fixation, ORIF. Okay, open reduction internal fixation. Open reduction internal fixation is done with the help of a non-rigid or a semi-rigid fixation, or it can be done with the help of a rigid fixator. वो किस तरह है करते हैं जी, ये दोनों ऑप्शंस विच आर लाइक द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटिंग फ्रैक्चर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे. और तब तक आप लोग जो है आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना फ्रैक्चर्स की, वो है किलीज़, एंड द अदर टेक्स्ट बुक दैट यू हैव टू फॉलो इज़ नीलिमा. इसके अंदर से आप लोग इसको रीड करें. वील हैव ए लाइव सेशन, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन. कोई